Assalamualaikum everyone. Welcome to OMNI Academy's Career Counseling webinar on web development. We have our trainer, Mr. Faris Javed, who will be conducting our workshop today. Over to you, sir. मुझे आप पोस्ट बनाना। Okay, sir. Okay, so let's start the full stack development. So basically, full stack development is lecture on how the web works. What do we mean by the term full stack? A brief overview of the full stack. Why we chose Django or Flask for this. Let's get started. Before we can begin learn about the technologies in this course, we need to understand how the web works and what constitutes the full stack. Okay. So what happens when you're at home and you open the browser and visit a website? Let's break down the basic steps. So basically, आपने कभी भी कोई भी URL अगर use किया, then वो redirect हुआ towards IP address के through एक server पे जाता है और वो server उस IP address को catch कर लेता है and then उसके बाद क्या होता है कि वो IP address से जो data recover करता है वो फिर आपको आपके browser पे show होता है. So you can take this as like आप किसी भी website पे जाते हैं जब आप कुछ URL डालते हैं जब आपको जो डेटा आता है वो तब आता है जब सर्वर उसको वापस भेजता है रिक्वेस्ट को. ठीक है. सो ये काफी बड़ा स्टेप है लेकिन ये बहुत फास्ट होता है तो आपको उसका आइडिया नहीं होता और ये साथ ही काफी हाई लेवल एक्सप्लेनेशन है. सो अभी के लिए इसको हम सेट करते हैं और देखते हैं व्हाट डज द फुल स्टैक मींस. सो वेबसाइट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है. ठीक है. Front end is what you see as a user on the website. The back end is a technology used to actually decide what we show you on the front end. Front end revolves around three technologies: HTML, CSS, JavaScript. यही तीन टेक्नोलॉजीज हैं. इन तीन को मिला के जो फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के वो भी बनते हैं और इन तीन को मिला के जो वेबसाइट है वो भी कंस्ट्रक्ट होती है. वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है, जो यूजर एंड होता है, बेसिकली जो यूजर देखता है वो इन तीनों को मिला के कंस्ट्रक्ट होता है. ठीक है. फिर हम आगे चलें. साथ ही और कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं jQuery, बूटस्ट्रैप, मगर ये दोनों भी इसी पे बनी हुई हैं. ठीक है. HTML, hypertext markup language. Every website will have HTML. Is the structure of web page. It is the structure of the web page. You can view it by right clicking on the website and selecting view page source. Okay. अगर आगे चलें तो आपके पास आता है CSS, which is cascading style sheets. ठीक है. CSS is the actual styling of the website. Colors, fonts, border, etc. It's all defined by CSS. CSS is not mandatory, but almost all sites have it. Okay. JavaScript allows you to add interactivity to the website, including programming logic. Any site with interactive uses JavaScript only. Otherwise, the site is static. The first half of the course focuses on the front end. The front end always uses those three technologies. However, the back end is where a multitude of options. The backend of a site has three components: the language, the framework of the language, the database. Technologies such as PHP, Node.js, Ruby, Rails, Java, Python, etc. are all available. Options for a website. How do we decide which to choose? So इस कोर्स में हम जो है ये कहते हैं Python as a language चूज करते हैं, Django और Flask as a framework. Django या Flask में से कोई भी एक framework को हम चूज कर लेते हैं और MongoDB और SQLite ऐसे डेटाबेस है. MongoDB आप तब यूज करें जब आपकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज आप SQL की तरफ ही जाएं क्योंकि ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है और सबसे बड़ी बात कम्युनिटी बहुत बड़ी है. अगर आपको सस्ते भी हैं तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ SQL. आप SQL में So Python is a great language to learn. It's simple, powerful, and has many libraries. Django is the most popular and most powerful. Basically, powerful काफी ज़्यादा framework है Python का, because बड़े-बड़े banks जिनकी website इस पे चल जाती है आराम से, banking की website बन जाती है और बैंक का पता है कितना data होता है तो सारा इस पे आराम से आता है. CRM application जिससे बनती हैं, social media application जिससे बन जाती है, तो काफी सारे काम आपके हो जाते हैं. SQLite comes with Django और Flask.
and Python nothing more than easy touch. As you mentioned on the course, you will be discussing this topic in much more detail, but now you should have a high level view of what you use in this course to turn yourself a full developer in Django. अच्छा, फिर तो हमने Django की बात कर ली, तो अगर किसी का भी क्वेश्चन तुमसे पूछे देन आपको बैक एंड के बारे में प्रॉपर्ली बता। यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है? नहीं, Django फ्रंट एंड में यूज नहीं होता, Django बैक एंड में यूज होता है। सही, मुस्तफा का सवाल है, Django बैक एंड में, फ्रंट एंड में होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैक एंड की, हाउ द बैक एंड वर्क्स। So basically, to use Django and Python effectively, a basic level of understanding the command line is necessary. आपको command line आनी चाहिए, जो कि आपको इस कोर्स में अगर आप Django करते हैं तो आपको बताई जाएगी कि Django में ज़्यादातर काम जो है वो command line का ही होता है। These commands are sometimes slightly different for Windows users versus Mac OS versus Linux. तो Windows, Linux और Mac जो होती हैं, तीनों की जो command line होती है वो अलग अलग होती है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग हैं तो command line भी अलग है। Refer to the notes for examples and refer commands. You only we need to know the few structured. In order to use Django, we need to have a pretty good understanding of Python. अगर आपको Django सीखना है तो आपके पास Python की काफ़ी अच्छी जो है ये कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए। आपको Python के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे होती है Python. Once you have learned enough Python, we can begin to use the Django web framework. ये वेबसाइट। So ये जो है हाई लेवल ओवरव्यू है Django का, Django काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट यूआरएल्स, तो उसके लिए आपके पास urls.py की फाइल होती है। तो ये फाइल्स वो फाइल्स हैं जो आपको बनी बनाई मिल जाती है जब भी आप जेंगो के प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये फाइल्स आपको बनी हुई मिल जाती हैं, urls.py, views.py, models.py। सही है। सो बेसिकली वी नो द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे HTML टेम्पलेट्स होते हैं, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी होता है इसमें, रिएक्ट भी आप यूज कर सकते हो इसमें, तो रिएक्ट को मेरा टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे we know the enough Python successfully to use Django as described. As we go to the backend, make sure to have a documentation. आपको Django की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है। आप इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स क्लोन कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर है, रेडिट है, वन सब Django सीख लें आप काफी इसमें क्लोन कर सकते हैं। ठीक है? We will first develop a very simple website of the Django and simple history user provided link with some of the basic user interactivity. बेसिकली इस कोर्स में हम क्लोन क्यों नहीं करेंगे, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है क्लोन ना करने का वो ये है कि डायरेक्ट अगर हम क्लोन कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा काम क्या चल रहा है। तो पहले हम बेसिक सी वेबसाइट करेंगे और इतना काम सीख लेंगे कि आपको जेंगो की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं उन्हें यूज़ करना आ जाए। देन क्लोन तो आप खुद भी कर लेंगे और सारा। तो चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो है इंस्टॉलिंग जेंगो, जो बैकएंड में जो हम करेंगे, क्रिएटिंग understanding Django projects, understanding URLs, views, and responsives, working with templates and static files like CSS and images, working with data and models, connecting data with relationship, one-to-many, one-to-one, many-to-many relationships होते हैं database के, adding administration panels to your projects, handling user input with forms, manually with Django, built-in form support. Basically Django के अपने forms होते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। Advanced features like class-based views, dealing with file uploads and how to serve uploaded files. Different ways of deploying and serving static files and user accounts. ये सारी चीजें आप इस कोर्स में Django के हवाले से सीखेंगे। अब हम बात करते हैं फ्लास्क पे। जहाँ तक किसी और क्वेश्चन को सोच,
Okay, so basically क्लास क्या सीखेंगे, HTTP सर्वर के बारे में आप सीखेंगे, गेट मेथड सीखेंगे, इसमें आप क्लास के बारे में सीखेंगे, दूसरा आप एप्लीकेशन के बारे में इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, स्टैटिक फाइल्स, टेम्पलेट्स और मॉडल व्यू कंट्रोलर पे आपका काम करता है क्लास, जो कि यूजर डील कर रहा होता है। देन आप स्पेशली सर्वर पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये बेसिक साइज कोड है क्लास का। सब सेशन सीखेंगे जो कि आपको गूगल पे लॉगिन करने के लिए यूजफुल रहता है। साथ ही आप इसमें API सीखेंगे जिसमें आप गूगल का लॉगिन भी दे सकते हैं। So that's it for this. So thank you so much. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you very much, participants, for joining this workshop. If you want to enroll in this course, you can contact any of these numbers that are being shown on your screen to get enrolled. Thank you very much.